प्रणाम सभी को। तो आज हम लोग आए हैं स्वर्गद्वारेश्वर महादेव, जो 8वें नंबर के महादेव हैं। तो आइए सुनते हैं स्वर्गद्वारेश्वर महादेव की पौराणिक कथा सुनने से और इसकी गहन इंसाइट्स, गहन अंतर्दृष्टि मानसी और शिव से। प्रणाम एवरीवन। 84 महादेव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्री स्वर्गद्वारेश्वर महादेव यानी 9वें महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। चलिए कथा की तरफ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं व गणमान्यों को बुलाया, पर अपनी पुत्री सती और उनके स्वामी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती उस यज्ञ में उपस्थित हुई। वहाँ माता सती ने देखा कि दक्षराज उनके स्वामी देवादिदेव महादेव का अपमान कर रहे थे। यह देख वे अत्यंत क्रोधित हुई और फलस्वरूप उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिवजी ने माता सती को पृथ्वी पर मूर्छित देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उस यज्ञ का नाश करने के लिए अपने गणों को वहां भेजा। अस्त्र शस्त्र से युक्त उन गणों का वहां देवताओं से भीषण संघर्ष हुआ। गणों में से एक वीरभद्र ने इंद्र को अपने त्रिशूल के प्रहार से मूर्छित कर दिया। उसके बाद गणों के सामने देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। गणों से परास्त हो सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और मदद के लिए अनुरोध किया। देवताओं की व्यथित दशा देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हुए और उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से गणों पर प्रहार कर दिया। सुदर्शन चक्र तीव्रता से गणों को नष्ट करने लगा। फिर भगवान विष्णु वीरभद्र की तरफ बढ़े और गदा से प्रहार किया, किंतु गणों में उत्तम वीरभद्र शिव जी के वरदान के कारण नहीं मरा। विष्णु भगवान के प्रहार से गण भागने लगे और भगवान शंकर के पास पहुंचे। उनके पीछे पीछे विष्णु और सुदर्शन भी वहां पहुंचे। वहां शिव जी को शूल लिए देख भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र सहित अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया और शिव जी ने अपने गणों को स्वर्ग के द्वार पर बैठा दिया और आज्ञा दी कि किसी भी देवताओं को स्वर्ग में प्रवेश न दिया जाए। तब सभी देवता एकत्रित हो ब्रह्मा जी के पास गए और अपना शोक प्रकट किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि कृपया हमें कोई उपाय बताएं ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। सारी बातें जानकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी शिव जी की शरण में जाएं और उनकी आराधना कर उन्हें प्रसन्न करें। आप सभी महाकाल वन जाओ। वहां कपालेश्वर के पूर्व में एक दिव्य लिंग है, उसकी आराधना करो। तब इंद्र इत्यादि देवता महाकाल वन पहुंचे और उस लिंग के दर्शन किए। उस लिंग के दर्शन मात्र से शिव जी ने स्वर्ग द्वार स्थित अपने गणों को हटा लिया और देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए इस लिंग को स्वर्गद्वारेश्वर कहा जाता है। दर्शन लाभ। मान्यता अनुसार श्री स्वर्गद्वारेश्वर के दर्शन करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि श्री स्वर्गद्वारेश्वर के दर्शन करने से समस्त भय और चिंताएं दूर होती है। प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को यहाँ दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। श्री स्वर्गद्वारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में खंडार मोहल्ले के पीछे नालिया पाखल के पास स्थित है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय महादेव। प्रणाम एवरीवन। महादेव 9
Swargdwareshwar Mahadev. My understanding of this Mahadev is more experiential. As I was sitting and connecting to the Swargdwareshwar Mahadev, I felt a ring around my neck, just like there was a cut in the shape of a ring around my neck. And I could feel that ring even around Mahadev. And there was a drumming, vibrational dancing all over my body, in my body, around my body. And I felt I was losing a certain something, I was feeling a certain release. And immediately to my mind, a relationship came up. And I went to a moment in that relationship which had already happened. And in that moment, in the past, I had compared my relationship to my idea of what the relation should be like. And when that reality did not match my expectation, I was quite upset. And I realized I could feel that narc in that moment. Even the memory of that, going back to that time, I could feel that narc. And in that past moment, I had tried to take a step which was based on my expectations, and it had backfired. In fact, the narc got even longer. But when I was observing that same incident with Mahadev, um, as I kept observing, I felt so much orgasmic bliss. It was like almost that kind of bliss I could feel in that past situation. And it really felt like heaven, and it felt like Mahadev was sharing what is the way to heaven in that situation. Immediately, I took another area of my life where I had been eating certain processed food for a few days, and now my body was feeling extremely lethargic. I was observing the long term effect on my body. And I realized that when I made the choice to have that kind of food, there was some heaven I experienced because it was very quick and it was tasting a certain way, but in a long term, it had become hell. And when I was observing that emotion that made me make that choice, I could feel it burning up like sati, and uh, and actually my body started feeling very fresh. Just half an hour before it was not, but my body started feeling very fresh, and I got very excited, and I looked at many areas of my life, one after the other, and everywhere I saw, as I went into that moment, I felt what is my mistake here, and a door would come up. Sometimes it was like I got, um, you know, it was a very tough situation. So I decided to distract myself. And even there, I realized that that was just extending my heaven, and what did this person really, really need in this situation. And as I was able to realize, there was so much bliss I was feeling, and I'm still feeling it. So this Mahadev is very miraculous, and I feel he can show us what the way to heaven is. And if we can identify whatever is the emotion, which if we can feel that emotion in that area of our life, um, and we can keep observing it, it will get burned up, and a new way can be revealed. So lots and lots of love. This story of Dwareshwar Mahadev shows the conflict between the knowledge
and the consciousness, as well as the conflict between the good and consciousness. Normally, we tend to think that bad is unconscious and good is conscious, which is not necessarily true. Even the good can be unconscious. So let's start with the knowledge. So now Daksh Prajapati, he is supposed to be the son of Brahma. So he basically represents knowledge. And once the person becomes knowledgeable, he can begin to condemn the consciousness, which is represented by Shiva. So, I mean, there is this grand Maya of knowledge, which can make a person believe that he is supreme and he has gotten all the knowledge. But what that person is forgetting, that living in the moment, tapping the consciousness, far, far greater than any of the grand knowledge you can have. And that is a conflict which is showing up uh, when Daksh Prajapati condemns Shiva. He doesn't want to invite him to the yagna. He even refuses to accept him of any importance. And that's where Shiva has to come and uh, destroy the yagna. It is same. The story is on similar lines as the Shiva cutting the fifth head of Brahma. So that is one part. Now, so now what is happening is, so all these devas, they are very enchanted, mesmerized by the knowledge part, and they are thinking that where the knowledge is, that's where they are supposed to be. So they are supporting Daksh Prajapati. Now, Vishnu is always on the side of good. So in the beginning, he supports, but Vishnu is also totally conscious. So at some point, he realizes that the devas have become unconscious. So there is no point in supporting the good also. So that is why when he goes to see uh, Shiva, he becomes antardhyan. He goes within himself. He realizes that uh, being on the side of good at this moment is being unconscious. And when he goes into the conscious, uh, he is with Shiva. So now we have to understand that what is good basically. What we consider good is all coming from past. Certain traditions were established in past, and following that is good. Sometimes, what became good in society is something which helped the society survive, and it worked. But it is all from past. All our definition of good and bad are coming from past. Uh, so when we just kind of get stuck with the what is good, we are actually getting stuck with past, and a freedom is needed where you can really see in that moment, is it really good? So that is why Shiva stops all devas to enter the Swarga, because they have lost that touch with consciousness. And when they kind of do the stuti of Shiva, and what is the meaning of that? When they get in touch with consciousness again, that's when the the doors of the heaven opens for them. So now what is the offering for us? Offering is, there are again two offerings. Uh, the ego of the knowledge, and if we demean a person who is conscious but not knowledgeable, and we can get mesmerized by the people who are knowledgeable, and we may even stop to listen to the person who is conscious. So that is one offering. Look at your life. If that's what is happening, it's very natural to happen, because as I said, knowledge has its own huge maya. So that is one thing. Second thing is,
how much you are believing in what is good. In fact, this offering is very, very important today because suddenly the whole concept of good and bad has transformed, completely collapsed that old concept. And we haven't yet come to the new concept of good and bad. So, whenever there is an attachment with past and we are considering something as good, that actually we may be following unconscious path. So look at your attachment with traditions which you consider as good. It's time to really go deep whether they are really good. Thank you. जैसे हमने सुना सुमन से इसकी गहरी अंतर्दृष्टि सुनी और शिवो सर और मानसी सर हम लोगों ने उसकी गहरे इंसाइट्स गहरे अंतर्दृष्टि सुनी। तो इन महादेव जिसे यहाँ पे आते हैं बेसिकली जो मेरा पहला अनुभव था इन महादेव मैं पहली पहली बार आया था तो ऐसा लगा जैसे हम लोग जैसे स्वर्ग का अनुभव जैसे स्वर्ग में जैसे अप्सराएं रहती हैं किस तरह का अनुभव स्वर्ग का किस तरह का एक्सपीरियंस जो स्वर्ग का होता हो सकता है या होता है वो अनुभव होता है इधर आके इन महादेव की जैसे हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो वो स्वर्ग का अनुभव होता है। तो जैसे हम संसार में रह के हम लोग अपने व्यवहार में या फिर मल्टीपलिस्टिक जैसे जीते हैं या जिस तरह से हमारे कंपैरिजन ये सब हमारे अंदर जो भावनाएं आ जाती हैं वो हम लोग स्वर्ग का अनुभव जो स्वर्ग का कैसा अनुभव जो हाईएस्ट डायमेंशन का उस वाइब्रेशन का कैसा अनुभव होता है वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जैसे हमें जैसे हम एक छोटे शहर में रहते हैं तो एक बड़ा शहर कैसा होता है जब हम लोग जाते हैं या वहाँ की डेवलपमेंट या वहाँ के वो देखते हैं तो एक अनुभव होता है कि वो भी कुछ होता है ऐसा। लेकिन अगर हम जिंदगी में छोटे शहर में रहेंगे तो हमको पता ही रहेगा कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी आती है या कैसे लोग नए नए कोर्सेज या एक्सप्लोरेशन करते हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे तो एक बार अनुभव करके भी वापस आ जाएंगे तो हम लोग उस चाहत में या वो हमारा डायमेंशन जो हम प्रयास करने लगेंगे उसको अचीव करने के लिए। तो स्वर्गद्वारेश्वर महादेव में ऐसे ही लगता है और जब यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो हमको एक स्वर्ग का अनुभव वो कैसा होता है वो होता है और उस डायमेंशन पे हम लोग डेफिनेटली वर्क करना चालू करते हैं हम उस डायमेंशन में हम लोग अपनी साधना चालू करते हैं। तो जैसे शिव सर ने बोला कि वहाँ पर हमको क्या लेना है उनकी गहरी इंसाइट्स शिव सर ने तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है क्या ऑफर करना है जो हमका नॉलेज से रिलेटेड जो अहंकार है इसको ये जो कपालेश्वर महादेव जैसा था हमारे जो अपना नॉलेज से रिलेटेड जो अपना शब्दों में जो नॉलेज होता है या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड जो अहंकार है वो हमको ऑफर करना है। और दूसरी बात हमको जो ऑफर करना है वो जो हमारा अच्छे और बुरे का क्या अनुभव है हम अच्छे को क्या समझते हैं गुडनेस जैसे हम लोग अपने संस्कार जो पिछले पास्ट के जो संस्कार होते हैं उसको भी हम अच्छा समझते हैं हमारी चली आ रही पीढ़ियों से हमारी जो धारणाएँ हैं मान्यताएँ हैं उस हिसाब से अच्छा समझते हैं क्या हमारा अच्छे का क्या अनुभव क्या एक्सपीरियंस है क्या हम अच्छा समझते हैं वो सब ऑफर करेंगे क्योंकि उसके बाहर ही हमको जाना है। अच्छा अच्छा नहीं होता है कि शिवसेना में होता है गुडनेस और बैडनेस तो क्या हम लोग जीवन में अच्छा समझते हैं कुछ रिलेशनशिप को अच्छा समझते हैं कोई अपने संस्कार को अच्छा समझते हैं किसी भी तरह का संस्कार हो इंडिया में जो संस्कार है अच्छा समझते हैं या फॉरेन का संस्कार रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी तरह का अच्छा ही जो है वो हम लोग ऑफर करेंगे और हमको उससे बियॉन्ड हमको अंतर्दृष्टि देगी। साथ में जो मानसी जो अभी जो शेयर किया है और उससे बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि शेयर की कि क्यों हम स्वर्ग को क्या समझते हैं छोटा स्वर्ग भी होता है जैसे हमने पिज़्ज़ा खाया तो उस समय का हमको स्वर्ग का अनुभव वो एक आनंद का अनुभव होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे हमको सस्टेनेबल नहीं वो हमको एक नर्क की तरफ ले जाता है हेल्थ की हज़ार्ड की तरफ जो पिज़्ज़ा जो जो कोल्ड ड्रिंक का नहीं होता या किसी तरह का फास्ट फूड जो होता है या किसी तरह का जो अनुभव जो क्षणिक हमको आनंद देता है या एक हमको कंफर्ट दे देता है बट वो लॉन्ग रन में वो ठीक नहीं होता वो स्वर्ग का अनुभव लॉन्ग रन में दिखता है या कोई ऐसा अनुभव जो शरीर धन समय पे हमको एक अनुभव देता है मे बी लग जैसा अनुभव बट वो लंबे समय के लिए हमें ठीक रहता है कॉन्शियस लिविंग के हिसाब से वो लंबे समय के लिए हम स्वर्ग का अनुभव देता है।
तो इस तरीके भी हम देखेंगे कि क्या हम लोग ऐसा काम करते हैं जो शरीर हमको सुख देता है, या हम कंफर्ट के लिए चले जाते हैं और बट लॉन्ग रन के लिए हमको वो एक नर्क का अनुभव देता है और सस्टेनेबल स्वर्ग नहीं होता है हमारा। तो ये हम लोग देंगे, बाकी में हम लोग आते हैं दर्शन और ध्यान के लिए, अनुभव के लिए। ये बड़े इंटरेस्टिंग महादेव हैं। तो स्वर्गद्वारेश्वर, धन्यवाद।